मियां अली इशफाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने टाइम दिया। लेकिन मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या रिलेशनशिप है, ऐसी क्या बॉन्डिंग है, लोग पूछना चाह रहे हैं कि आपकी इमरान साहब के साथ क्या ऐसी बॉन्डिंग है कि इतना सेल्फलेसली और इतना ज्यादा आउट ऑफ द वे। वकील तो कहता है कि भाईजान जब केस यहाँ पे आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा तो मैं करूंगा, मैं पीछे नहीं जाऊंगा किसी के। तो क्या क्या सीन है, क्या है सारा कुछ? Irfan bhai, thank you first of all for having me. Um, I'm sorry. I mean, it's a neat day. आपको पता है एक्टिविटी कैसी चल रही है, but I'll straight come to the point. Imran and I go back about 22 to 23 years. 22-23 साल गुजर गए हमें. And I tell you, we both came from a humble beginnings of our life. As a self-made person, we have both struggled in our career. और I tell you one thing, from the day one, हमने दोनों ने अपने रिलेशनशिप की जो बेसिस हैं वो मटीरियलिस्टिक या आर्टिफिशियल बेसिस पे नहीं रखी. There have been times in our life, आज तो चले, we both are professionals. Myself as a lawyer, he's a professional journalist. But I tell you honestly, when we were students, in those days back in about 20-22 साल पहले, कॉलेज में भी कभी लड़ाई चढ़ाई हो जाती किसी से. So I used to back him up, he used to back me up. कोई social issues हो जाने, and we used to stick together. And honestly, इंसान जब जवान हो रहा होता है तो शायद वो इतना मटीरियलिस्टिक या आर्टिफिशियल नहीं होता, या इतना वो मेच्योर भी नहीं होता कि वो किसी दूसरे शख्स से ताल्लुक बनाए, उसकी माली मुआशर की हैसियत दे के, या उसको अगर किसी से काम हो. वो अलग बात है कि डाउन द लाइन 20 years आज हम जहाँ पे हैं, दुनिया काफ़ी बदल गई है. एंड आई टेल यू, अल्लाह जानता है, अल्लाह हैज़ बीन एक्सट्रीमली काइंड. द बॉन्डिंग इज मोर गुड देन एवर. इट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग. बहुत सी जिंदगी में खुशियां आई हैं, इकट्ठे मौजूद थे. हार्डशिप्स देखी हैं, दोनों ने इकट्ठे मौजूद थे. अब मुलाकातें समटाइम बहुत कम हो गई, बट इन स्पिरिट whenever any one of us was needing each other in our life during the time when it was required, doesn't matter hardship or otherwise, हम दोनों एक दूसरे के साथ थे. I tell you one thing, and this is very important, you are the first one who has put me this question. I tell you, back in the reporting days of Imran used to tell his parents कि देखें, मैं जा रहा हूँ ट्राइबल एरिया में, मैं ये जो से रिपोर्ट कर रहा हूँ. अर्ली डेज और स्टेजेस, स्ट्रगलिंग स्टेजेस पे इंसान को बहुत सी मुश्किलात आती हैं, और इंसान अपनी कैरेक्टराइजेशन में उस लेवल पे नहीं होता जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंचता है, एक अपना सर्टेन स्टेटस अचीव करता है. ऑनेस्टली आई टेल यू टुडे, इमरान यूज्ड टू टेल हिज फैमिली, अल्लाह ना करे मैं ट्राइबल एरियाज में जा रहा हूँ, मुझे अफगानिस्तान भी कोई ले गया ना, तो दुनिया में कोई शख्स नहीं है अल्लाह की जात के अलावा, दुनिया में ये वो शख्स है जो बॉर्डर पार करके भी ना मेरे लिए आएगा. Even he would have to lose whatever he is having, but ये मेरे पीछे आएगा. So this was the confidence. And I tell you one thing, probably शायद उसका ये कहना और उसका मुझे इस तरीके से अपनी जिंदगी में perceive करना as a friend of such like caliber, that has put a lot of emotions inside me and put a lot of responsibility over me. कि आज भी I was just hearing him, so he is candidly, he was like, और भाई ना मैंने उसका शुक्रिया अदा करना है और ना मैं सारी जिंदगी करूंगा और अभी सिर्फ ये नहीं, उसने सारी जिंदगी मेरे लिए कर रहा है. तो ये you just imagine frankly honestly, उसकी देखे ना how believe that he is having in me कि यार बात सुनो, और भाई मेरे तो सारी जिंदगी ये काम चलते रहने हैं, और he would be coming to me for the rest of his life, to every fiber being inside my body. उसके लिए मैंने जाना है, करना है. और यकीन करें, पहले तो मैं करता था ना सेल्फलेस होके अपनी दोस्ती में, आज भी करता हूँ, लेकिन अब ना चीजें जरा थोड़ी इरफान भाई उससे आगे बढ़ गई हैं. आई टेल यू slowly, I don't want to comment on what is right, what is wrong, what is politics, which side he is on, what are his political narrative, but true. As a person, जो एक कैरेक्टर उसने अडेप्ट कर लिया है ना, जहां पे वो जिंदगी के मकाम पे खड़ा है ना, तो सेल्फलेस होना तो बड़ी दूर की बात है. somebody a week back was interviewing me and asking me, आपने फीस कितनी ली है? and I was telling, और मैंने कहा भाई इसके लिए मुझे कोई 50 लाख करोड़ जेब से भी लगाना पड़ गया तो मैं लगा दूंगा. बिल्कुल. The concept of fees doesn't exist. So in addition to our relationship, the very close one, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अल्लाह ताला ने इसको एक किरदार दिया है, अल्लाह ताला ने इसको एक इज्जत दी है
अल्लाह जानिब अल्लाह है, ये सिर्फ अल्लाह की जानिब से है। और हो सकता है इस इज्जत में भी अल्लाह की जात इसकी आजमाइश कर रही हो। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इसके लिए इस आजमाइश में भी आसानियां पैदा करे, ये एक अच्छा इंसान बने। एज अ पर्सन इसको मैं जानता हूँ, अच्छा आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, दलेर आदमी है, असूल पसंद है, जिद्दी भी है। ये मेरा और उसका कॉमन फीचर है। और अभी भी ये जिस भी हम सूरत हाल से गुजरे हैं, तो हमने अकेले बैठ के जो चंद बातें करनी थी वो की। वो मेरी तरफ देखे, मैं उसकी तरफ देखूं, तो कहे हाँ भाई and I was asking him, अभी मेरी चोट तू खड़ा हुआ है? And he was like, तू खड़ा है तो मैं खड़ा हूँ। And I was like, it's the opposite, तू खड़ा है तो मैं खड़ा हूँ। And then we both decided कि भाई बात सुनो, this is probably the time in our life, and this is the moment, not that we were inviting this in our life, not that we want it to happen the way it has happened in our life. True. But actually, down the line, if I go back in times, 20-25 साल पहले, the aims, the motives, the objectives, the goals that we set up for our life, उस connotation में और उस contextual background में मैं कह रहा हूँ, we were just exchanging notes to each other in our conversation के बाद सुन जिंदगी में मौका आ गया 20-22 इस मौके के लिए कि हमें जिंदगी में असूल पसंदी के लिए कभी खड़ा होने का वक्त आया ना, तो अल्लाह से दुआ है मेरी अपने लिए, उसके लिए भी है। चलो पहली तो ये कि अल्लाह मेरी जान ले ले, अल्लाह उसकी जान की हिफाजत करे। दूसरी है अल्लाह हमारी जान ले ले, अल्लाह हमारा ईमान न ले। तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। आई एम नॉट क्लेमिंग टू बी ए सेंट, आई डोंट even claim that he is a saint. Here we both are human beings. Maybe we are the bad ones, but we try to be lesser of all the evils. कोशिश करते हैं कि जिंदगी में जो गुनाह है वो कम से कम किए जाएं। कोशिश करते हैं जिंदगी में कि जो रास्ता है वो उसको अच्छा अपनाया जाए। ये कोशिश है। आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर गुड पीपल, बट एट द सेम टाइम आई एम सेइंग दैट वी ट्राई टू बी लेसर ऑफ द अदर इवल्स। कोशिश करते हैं हम ईमान के या अच्छे मुसलमान होने के आला तरीन दर्जे पर फाइज नहीं है, लेकिन कोशिश है, एक जज्बा जरूर है, एक अच्छा मुसलमान, खासकर अच्छा पाकिस्तानी मुसलमान, और फिर पाकिस्तानी मुसलमान के बाद एक अच्छा पाकिस्तानी बनने की कोशिश की जाए। सो दैट्स द स्पिरिट बिहाइंड द एंटायर रिलेशनशिप। लवली। अच्छा अली भाई, थोड़े से कुछ सीरियस क्वेश्चंस। अटक, व्हाट यू एक्सपेक्टिंग दैट? So basically, Irfan bhai, I tell you, believe it or not, but I'll tell you the truth. So it's an interesting thing. So after Islamabad, I went to Attak. So there was this 100-200 local bar member, all the lawyers and super senior lawyers. Super senior lawyer I would call जिसकी 45 से 50 साल की वकालत हो गई है. So they were there in the court of law. बैठे हुए थे। नहीं, मैं इससे थोड़ा सा पहले से आ रहा हूँ। जब आपको फोन आया कि अटक पे और वो उस इंटरचेंज पे, इस्लामाबाद इंटरचेंज में ये इशू हो गया है, हाँ, so what was your first reaction? यहाँ से शुरू करना है। So इस्लामाबाद में मैं आता हूँ क्योंकि इस्लामाबाद का एक बड़ा अहम क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछना है। तो जब आपको फोन आया कि जी अली, इमरान अली, मैं पकड़ा गया हूँ, हाँ क्या हुआ? सो इरफान भाई, मैं आपको इसको जरा थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलूंगा, इससे भी जरा पीछे लेके जाता हूँ। सो बेसिकली 29 की रात को ये एफआईआर हुई है। 30 वाले 29 की रात को, हाँ जी 29 की रात को, 29 जून की रात को ये एफआईआर होना शुरू हो गई। 30 को मैं लाहौर हाई कोर्ट गया, मेरी पिटीशन फिक्स हो गई। मैंने कहा मेरे खिलाफ जितने मुकदमा थे उसका रिकॉर्ड दिया जाए। पिटीशन में ऑर्डर हो गया आईजी को के रिकॉर्ड दें। उन्होंने पार्शियल रिकॉर्ड दिया फ्राइडे वाले दिन 1 जुलाई को रिकॉर्ड दिया, और 4 जुलाई के लिए, बिकॉज सैटरडे संडे वाज देयर, सेकंड थर्ड पास ऑन हो गई। 4 जुलाई को हमें 17 मुकदमात का रिकॉर्ड दिया। संडे वाले दिन 3 जुलाई को मैंने 2 और पिटीशंस प्रिपेयर की, चूंकि सैटरडे को हमें पता लग गया कि इमरान के लाइसेंस वेपन कैंसिल कर दिए हैं, और उसकी कार का जो बुलेट व्हीकल कार का परमिट है उसको भी वो भी खत्म किया। सो मैंने संडे वाले दिन पिटीशन तैयार की, मंडे भी फाइल 2 पिटीशन। एक तरफ हम 2 पिटीशन फाइल कर रहे थे, तीसरी पिटीशन हमारी लगी हुई थी। एक पिटीशन में हमने रिलीज लिया, इन्होंने कहा जी 17 मुकदमे हैं। साथ ही दूसरी पिटीशन हमने फाइल की जो कि ट्यूसडे के लिए फिक्स हुई, व्हिच वाज 4th and 5th जुलाई। 5 जुलाई को मैंने सारा रिकॉर्ड ले लिया लाहौर हाई कोर्ट से। सो आई केम बैक इन माय ऑफिस, शाम बैठे रात बैठे, इसकी 17 पिटीशंस मैंने तैयार की, जो 17 मुकदमा थे उसकी बेसिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने डिसाइड किया कि हम इसकी प्रोटेक्टिव प्रीअरेस्ट बेल कराएंगे। व्हाट हैपेंड देन वाज कि मैंने इसको वेडनेसडे वाले दिन फाइनल गो अहेड दिया इन द आफ्टरनून टाइम कि लिसन,
I will be leaving Lahore at a such and such time. तुमने उसी time पे निकल आना है, and so that we will be meeting in Islamabad. And from there on, we will be just straight away just going for the pre-arrest bails and subsequently हम cases को face करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये भी वक्त आ गया. Let us start. What happened then was कि इसने निकलते हुए मुझे टेलीफोन किया and subsequently he was on call with me. जब इसने मुझे इस्लामाबाद टोल पर अली मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया. And for a moment I was like, but he was in Peshawar at that time. He was not in Lahore. नहीं, जब निकलते हुए मेरी से बात हुई, इसने मुझे कहा कि अली मैं निकल रहा हूँ and I'll be in Islamabad in about 2 hours. And I was there already. लाहौर से निकल रहा हूँ, लाहौर से निकल रहा हूँ या इस्लामाबाद पेशावर से निकल रहा हूँ? पेशावर से. ये इमरान was in Peshawar. He was in Peshawar. He was leaving from Peshawar to Islamabad. And I reached, ये अपने schedule time से 2 घंटे late था. अच्छा, the other thing. अच्छा. Now it has passed. आपने लाहौर से आना था? हाँ, ये 2 घंटे. आपने लाहौर से आना था? इसने आना था. मैं लाहौर से आना था. मैं लाहौर से पहुंचा इस्लामाबाद. ये पहुंचा पेशावर से इस्लामाबाद. ये 2 घंटे लेट था ये. And then what happened was, जो मैं समझता हूँ आज, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है. देखिए ये कार्रवाई जो है ना इसके खिलाफ चल रही है 21 मई से 21 मई को इस पे 2 सिट के पर्चे हुए थे, जिसमें मैंने इसकी लाहौर हाई कोर्ट से 2 प्रोटेक्टिव बेल्स करवाई थी. और सब्सिक्वेंटली फिर मैंने 24 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस पर ऑर्डर लेके दिया था, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इमरान रियाज खान और बाकी को प्रोटेक्शनर्स जो एंकर पर्सन है इनको जी आई रिमेंबर की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से अरेस्ट नहीं होगी. ठीक हो गया. अब ये इसी पे वापस आए. इसने मुझे टेलीफोन किया लेट होके कि यार अच्छा मैं अब निकल रहा हूँ. I was already in Islamabad and I said बस खैर से पहुंच भाई, all set, and you are straight away coming to me and you know you'll be staying with me. I have a house come residence, office come residence in Islamabad. It's quite a big one, so we have the facility available. So anyhow, what happened then was ये पहुंचा इस्लामाबाद टूल प्लाजा पे. ये मेरे साथ लाइन पे था. इसने मुझे कहा अली मुझे टूल प्लाजा पे इन्होंने रोक लिया. And because as a professional lawyer, as his friend, and given the nature of the hostile circumstances, I was aware of the entire situation के क्या-क्या worst case scenarios 1, 2, 3 हो सकते हैं और best case scenario हमने plan किए थे. So we were having this all contingency plan ready for us, that as and when required we will just push the panic buttons. Panic button नहीं दबाने, because from plan A, B, C सारे आपके तैयार थे. Everything was ready. अच्छा मैंने इसको कहा अच्छा बात सुन, listen, now the time has come. What I would do is प्लीज मेक श्योर दैट तुम अपनी गाड़ी का दरवाजा लॉक कर, रिकॉर्ड कर वीडियो ऑनरेबल तरीके से. जो अगर ये छोड़ते हैं तो ठीक है, नहीं छोड़ते तो ऑनरेबल तरीके से जो हमने डिसाइड किया कि स्ट्रेट अवे सरेंडर करेगा. एंड बिकॉज ऑफ माय कंटिजेंसी प्लान, माय कंटेम्प्ट पिटिशन वाज रेडी. ऑल ही वाज रिक्वायर्ड टू जस्ट अपडेट मी हिज लोकेशन वेयरएवर ही वाज. And if that location was within the territorial jurisdiction of Islamabad Capital Territory, so I would have to straight away go and file the contempt petition. Allah was very kind. Allah has always been very kind. रात 11:15 बजे इसने मुझे टेलीफोन किया. I straight away contacted the registrar office of Islamabad. Now it is unusual, unless you have good professional and personal relations. Good relations. True. Good PR. True that. And as a caliber, being a good lawyer and as well as a petitioner, then you can be obliged with. Otherwise, it's not normally the case that every time you would go in the middle of the night and the courts agreed. मैंने स्ट्रेट अवे कांटेक्ट किया तो जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनके ऑफिस की तरफ से कम्युनिकेशन हुई 5 मिनट में, भैया आपकी कंटेम्प्ट पिटीशन रेडी है. एंड वी सेड कि जी 2 मिनट्स में आपको आ रही है. एंड वी सेंड दैट पिटीशन टू हिम एंड 10 मिनट्स आफ्टर सेड कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ सकते हैं. टू हिज सरप्राइज मैंने कहा जी मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़ा हूं. ऑलरेडी बाहर खड़ा हूं. अच्छा, नॉट जस्ट इस्लामाबाद, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट. ओके, एग्जैक्टली. एंड इट वाज हैपनिंग सो क्विकली. It was like honestly जब आप देखते हैं ना मूवीज में फायर ब्रिगेड या 112 या पाकिस्तान एयरफोर्स को कोई बताए देखो जी हमला हो गया तो 3-4 मिनट्स प्रोटोकॉल है कि आपने टेक ऑफ कर दिया और फाइटर जेट हवा में होने चाहिए. टेक ऑफ करना, बिल्कुल. That was actually the mode that we were following, to be very fair and honest. So that has exactly happened the way I'm telling you. So we went to Islamabad High Court. Comes a time रात 1-2 बज गए. ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सुबह 10 बजे रिपोर्ट मंगवाई. रिपोर्ट सबमिट हुई. उन्होंने कहा जी पंजाब की जुरिसडिक्शन है. मैंने कहा जी बॉर्डर लाइन है. द कोर्ट सेड and it's a codified and uncodified language between a lawyer and the chief justice. मैंने कहा देखो, let's not get into the dispute of
you have been arrested from here or there. It's better that I will keep the dispute as it is without settling कि तुम ठीक कह रहे हो या इस्लामाबाद पुलिस या पंजाब पुलिस ठीक कह रही है. And I got the signal. And now it's been produced before utter. Just go with the flow. In other words, oh भाई जाओ राव, बिस्मिल्लाह, हीरो बनने का टाइम आ गया.